साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। एससीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। We must take advantage of the mega-scale market and the complementary strengths of member states' economies. We aim to improve the level of trade and investment facilitation, strengthen cooperation in energy, infrastructure, green industries, digital economy, technological innovation, and artificial intelligence, and jointly move toward modernization through mutual achievements and co-creating the future. We have taken the lead in proposing a global governance concept based on consultation, joint contribution, and shared benefits, practicing genuine multilateralism, deepening cooperation with the United Nations and other international organizations, and constructively participating in international and regional affairs, always standing on the side of international fairness and justice. We advocate cultural inclusiveness and mutual learning among civilizations, and oppose hegemony and power politics. China plans to implement 100 small but impactful livelihood projects in member states where needed. Within this year, China will provide 2 billion yuan, $280 million, in grant assistance to member countries. Over the next 3 years, an additional 10 billion yuan, $1.4 billion, in loans will be extended to member banks of the banking consortium. Fourth, we uphold fairness and justice, promote a correct understanding of World War II history, and oppose Cold War thinking, bloc confrontation, and acts of bullying. We safeguard the international system with the United Nations at its core, support the multilateral trading system centered on the World Trade Organization. We should advocate for equal and orderly multipolarization of the world, inclusive economic globalization, and promote the construction of a more just and equitable global governance system. We work to build a more just and reasonable global governance system.
25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। For the good of our nation, let's work together and let's truly make America great again. The fastest news breaks. Requested PM saying that look, you will have to speak to Putin and to Zelensky. The biggest newsmakers. The relationship with India is probably the most important bilateral relationship the US will have for the rest of this century. The capital delivered quite an election result today. Expert analysis. The million-dollar question today is how to stop this dance of death. Ground reports. I'm standing at the crossroad of the Kumbh Mela. Behind me are more than 100 entry ghats. Long-form interviews. Exclusionary politics is reflected in Manipur case as well. You don't bother because this is a small state. Deep dive into burning issues. It's often said DRC could be the richest country in the whole world. It's because of what sits underneath. Why exactly did the US topple the Sheikh Hasina government? HT videos. We don't just break news, we break it down.